movement we're talking about. We're slowly going to see amazing movement and maneuvers in the air. रोमांच का मंच बदलता हुआ अब जमीन से आकाश की ओर नजर। गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण फ्लाई पास्ट। कर्नल विजय पुंडीर के नेतृत्व में 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम। ये रेजिमेंट वायुसेना के साथ इस समारोह में फ्लाई पास्ट कंट्रोल के लिए संचार प्रदान कर रही है। कोर ऑफ सिग्नल्स की इस यूनिट ने पिछले महीने 75 साल पूरे किए हैं। आज के फ्लाई पास्ट में विमान अलग अलग जगह से उड़ान भरकर यहां से गुजरेंगे। It's truly an image that is going to remain embedded in our minds. This is coming from the direction of Rajpath Bhavan, the Chakra formation, and the Mi-35 attack helicopters are taking off from Hindon Air Base, and that's where they've come from. Look at the coordination. The Mi-35, a highly maneuverable attack helicopter. Formation is flying at a speed of 240 kilometers per hour and is led by Group Captain Suresh Kumar Tiwari. The other two captains are Wing Commander Adarsh Kumar and Squadron Leader Dishtiman. हेलीकॉप्टर्स की चक्र फॉर्मेशन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां राजपथ से गुजरते हुए जबरदस्त उत्साह रोमांच यहां दर्शकों में। ये परिवहन विमान है जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। So traditionally, flypasts also serve as an aerial salute, and they show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. And we can see all of that today. In the words of a pilot, the thunder becomes felt in the heart and not in the head. और निगाहें एक बार फिर आकाश की ओर। कुछ ही देर में यहां से हर्क्यूलिस फॉर्मेशन में विमान गुजरेंगे, जिनमें 3 C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान विक्ट्री आकृति के साथ हर्क्यूलिस फॉर्मेशन में विमान से 350 किलोमीटर की रफ्तार के साथ फॉर्मेशन की कमान का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थुला गोपी मोहन। अन्य विमानों में विंग कमांडर सबम लेनिन सिंह और विंग कमांडर एम चहल। इन विमानों ने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। The light cloudy sky and the diffuse sunlight giving a totally different character to the flypast, and a beautiful one at that. Vanishing into the blue, the Hercules formation. It is through flypast that ceremonial and national pride also imprint themselves on a nation's memory. And the next formation is that of the Netra, which is also the eye in the sky. It is an airborne early warning and control system aircraft with state-of-the-art early warning radar and a number of advanced electronic warfare equipment, all indigenously designed and developed by the DRDO. And here we have, this aircraft is being flown by senior test pilots, Group Captain Badrish Atharya and Group Captain Pradeep Batra. आकाश में और अब C-17 ग्लोब मास्टर जिसने हिंडन से उड़ान भरी है और सुखोई जो जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचे हैं, अभी कुछ ही देर में यहां से ग्लोब फॉर्मेशन में गुजरेंगे। C-17 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई 30 विमान ग्लोब फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन तुलसी रुक्मणी रवि संभाल रहे हैं। SU-30 विमानों की कमान विंग कमांडर प्रीतम संतरा और स्क्वाड लीडर रोशन महतो के हाथ, और इनकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे की। So excitement galore at the Republic Day parade here.
There is speed, there is excitement, pulse racing, daring, and there is of course precision. In all thanks to these magnificent men in their flying machines. For these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to just be an extension of them as they take wing and vanish into the blue. जनसमूह में बहुत उत्साह और रोमांच की भावना, सभी निगाहें आकाश की ओर। हालांकि आकाश में बादल हैं, लेकिन हवाई जहाज यहां से गुजर रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग फॉर्मेशन में। मुख्य अतिथि आज के गणतंत्र दिवस समारोह का आनंद लेते हुए। And all eyes up in the sky for the next formation, which is going to be the Tejas formation. In Vic formation of the LCA aircraft at a height of 300 meters, speed of 780 kilometers per hour. Led by Group Captain Madhav Rangachari, and flying in formation were Wing Commander S. Dhankar and Wing Commander S. Roy. तेजस 780 किलोमीटर की रफ्तार से यहां से गुजरे और अब जैगुआर फॉर्मेशन में 5 जैगुआर विमान एरोहेड फॉर्मेशन में निकलेंगे, जिन्होंने नाल एयरबेस से, जो कि बीकानेर के निकट है, वहां से उड़ान भरी है। ग्रुप कैप्टन डी कुकरेती इस फॉर्मेशन की कमान संभालेंगे। विंग कमांडर पारिजात सौरभ, विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह, विंग कमांडर और विंग कमांडर एम हुदा अन्य विमानों में। So we have birds in the air and we have our birds in the air, and of course over here all eyes in the air. Following the Jaguar, we'll have the Fulcrum. These are 5 MiG-29 upgrade air superiority fighters, and they are flying in a formation, have been recently upgraded and have become extremely potent air-to-air as well as air-to-ground weapon platforms. Led by Group Captain Vikas Sheel Singh Saini. The other members were Wing Commander Sandeep Banerjee, Wing Commander C. Suresh, Wing Commander Parijat Jha, and Squadron Leader Nitin Nagarkoti. दर्शकों में इतना उत्साह है कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर इस पूरे दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। पलक झपकने में ही विमान निकल न जाए, इसके लिए उनकी नजर लगातार आकाश की ओर। और अब 3 सुखोई 30 MKI विमान त्रिशूल फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए ग्रुप कैप्टन मनीष चंद के नेतृत्व में हमारे ऊपर से तीनों विमान अलग अलग दिशाओं में विमुख होकर त्रिशूल की रचना करते हुए विंग कमांडर नितिन कुमार वत्स और विंग कमांडर सुमित गर्ग अन्य विमानों में। What heart-stopping moments. And well, if you've been holding your breath so long, please don't let go right now, because coming up is the culmination of the parade. A lone Su-30 MKI will be flying at a speed of 900 kilometers per hour, will split the sky with a vertical Charlie. It is being piloted by Group Captain P. Agnihotri, commanding officer of the number 220 Squadron, with Wing Commander Vipul Mishra. And there it goes. What an aerobatic maneuver. A high-speed run at a low level and then a vertical climb. Very difficult even for the eye to catch. विमान आकाश में ओझल होते हुए, लेकिन रोमांच उत्साह सभी के मन में है। पृथ्वी से आकाश तक हमारे राष्ट्रीय पर्व के उत्सव की धूम है।